I belong from the lucky Corona batch. So we had no 12th class 12th exams. So having no exams in class 12 like helped us to prepone my CA journey by 6 months. USP of the CA courses, if you get to a formal exposure in at the tender age of 19, 20, 21. So you must grab it with both hands and get the best opportunity you can. नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू थिंकिंग ब्रिज। और आज के सेशन में हमारे साथ हैं फलक मोहनोत। फलक अभी रिसेंटली वन ऑफ द बिग फोर्स में सिलेक्ट हुए हैं। उनकी पूरी स्टोरी हम सुनेंगे एंड इट्स बीन अ मंथ सिंस ही इज वर्किंग इन वन ऑफ द बिग फोर्स। और उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस हम सुनेंगे, उनकी सीए की जर्नी हम सुनने वाले हैं। सो अभी आर्टिकलशिप उन्होंने स्टार्ट करा है। सो लेट्स हियर फ्रॉम फलक। हाय फलक, हाउ यू डूइंग? Hello, ma'am. Thank you for having me here. सो गुड टू हैव यू हियर। शुरू से शुरू करते हैं फलक। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर सीए जर्नी। कैसे डिसाइड करा कि यार सीए ही करना है? व्हाई नॉट एनी अदर कोर्स? Uh, I belong from like a typical Marwadi Rajasthani family. So my father is a CA, my mother is a CA. So automatically, like I thought it was in my genes to do CA. चलो, दैट्स Uh, ग्रेट। CA was like clear very much after 10th. Like पहले साइंस का था बट साइंस में समझ आ गई कि बस की नहीं है. Then it was there was only one option, commerce and CA. हम्म। सो वॉक अस थ्रू योर सीए जर्नी। मतलब कब स्टार्ट किया था, फिर इंटरमीडिएट के लिए कैसे प्रिपेयर करा? आर देयर एनी इंपॉर्टेंट लेसन्स दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद योर जूनियर्स एंड पीयर्स? Yes, ma'am. So I belong from the lucky Corona batch. So we had no 12th class 12th exams. So having no exams in class 12 like helped us to prepone my CA journey by 6 months. I was able to like if I had given my exams class 12th exams in April and May, then I would have given my CA foundation exams in November 21. But having no exams saved me and I gave my foundation exams in May 21 and without any coaching and nothing. So foundation is I think basically class 12th and a little bit more than that like law and everything. So I think people can prepare themselves without any coaching. So I just studied for like 2 or 3 months by myself and I gave the exams, cleared them. Then I had one whole year for intermediate in May 22. I took coaching of all 8 subjects and yep, it definitely requires hard work. लाइक कोचिंग चलती थी दिन में 8 घंटे 8 से 9 घंटे कोचिंग चलती थी एंड देयर वर स्टिल स्टूडेंट्स हु यूज्ड टू लाइक आफ्टर completing 8 to 9 hours of coaching they used to like do the homework and गेट एवरीथिंग डन. मैं तो मतलब 8 9 घंटे बस आई यूज टू अटेंड क्लासेस अटेंटिवली बट देन उससे आगे कुछ हो नहीं पाता था. तो मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी इंटरमीडिएट में बट इट विल बी वर्थ के मतलब आपके 6 मंथ्स बचेंगे. तो आई ऑल्सो फील दोनों ग्रुप एक साथ देने चाहिए. और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मतलब आप रैंक के लिए ऐसे हो जाओ कि आप जानते हो कि आप अभी दोगे तो आप पास तो हो जाओगे बट आपको रैंक चाहिए. तो मेनी स्टूडेंट्स लाइक टेक 6 months ऑफ लीव फॉर जस्ट टू गेट दैट रैंक. So I don't think like it is favorable. You should save 6 months of your time and मेहनत तो लगेगी but it will be worth the effort. चलो, So दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। यू सीम टू बी अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट की फाउंडेशन भी ऑटोमेटिकली खुद से पढ़ के निकाल लिया एंड यू क्लियर्ड योर सीए फाउंडेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट, सीए इंटरमीडिएट आल्सो इन फर्स्ट अटेम्प्ट। चलो, ऐसा बट लग रहा है बस आपको. no, now let's come to your interview journey. Jaipur in itself has, a lot of big names in terms of mid-sized firm. So why did you not decide to do it from Jaipur? Why did you decide कि मुझे यार Big Four से आर्टिकलशिप करना है? वो कीड़ा कहाँ से आया Big Four में जाने का? uh, I think the USP of CA courses they allow us to get into large firms at a very young and tender age of like I am still 19 now and I get to work in such one of the big four of the organizations in the world auditing like huge clients Reliance, Tatas and Adanis and everything. So I think people should take advantage of this CA course and take every opportunity they get to land in the biggest firm possible. So the amount of exposure at such young age we get is will make us more resourceful in later years of our age, professional career also. एंड बिग फोर का तो मतलब इनिशियली दिमाग में था कि अगर एक अटेम्प्ट में क्लियर होता है तो मतलब बिग फोर ही प्रेफरेंस रहेगी जितना हो सके क्योंकि आई न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस एंड एवरीथिंग. एट जयपुर का ऐसा था कि
Mumbai and Bangalore has, far more industries, and also tier one cities and metro cities give more exposure as compared to Jaipur. Jaipur is also good, but I think I needed more exposure, to get out of my family, learn to live Hmm. a life on my own. And so I got placed in EY Mumbai and I took it. चलो बहुत ही बढ़िया. सो मैं सबको बता दूं कि फलक का ऑफ द 4 बिग फोर्स 3 बिग फोर्स में सिलेक्शन हो गया था फॉर द ऑडिटिंग प्रोफाइल. करेक्ट. सो Yes, बट फलक जो है करंटली इज वर्किंग इन EY, right? EY Mumbai, and in yes, the ma'am. auditing profile. So now we are going to have a detailed discussion on about the interview. तो हम जो क्वेश्चंस भी पूछने वाले हैं वो आप मुझे तीनों का मिक्सचर बताना, दैट what kind of questions were asked, किस तरीके का जो है लेवल था क्वेश्चंस का, ग्रिल किया कि नहीं किया, Yes, and ma'am. what was the entire procedure. Just walk us through your entire interview journey. So I give plenty interviews, like 6 to 7 interviews. So I remember that I have already given for many firms. I applied in big 10 firms because I wasn't so sure that I will definitely get in big four. So I gave many and many interviews, and like some interviews were quite normal. They just ask basically AS, essays, and something little bit about law. And some interviews go, it's like upon the interview, one can ask only from above and one can go straight in depth. Hmm. So I remember one of the question which like completely dazzled me was one of the big four interviewer asked me, like he wanted me to think. So he gave me a question like, if a company has purchased a building just to give it on rent and earn rental income from it, Hmm. so will it be classified as PPE in under balance sheet? So I just had the brief knowledge of all the essays and ES, and I just thought that since it is not being used in their operating procedures, it Hmm. would be considered as a non-current investment, and therefore shall be shown as a non-current investment. But then in the interview itself, leader told me that like the definition of PP, it consists for rental for admin purposes. So just for rental it consists. Therefore, it will be classified as PP. So such in depth they go, and some interviews were like basic depreciation entries they asked, which They I ask you think journal entries. yes, the journal entry for depreciation. Hmm. Uh, so even from the most basic like journal entries, they can go to most advanced like this classifying as PP and other things. And I think essays, AS, and law should be prepared thoroughly well before giving any interview. Hmm. Like they can ask anything from that, so you just need to be prepared. And the practical questions like how will you audit PP or how will you audit cash in hand. Those everything is just covered in Thinking Bridge course. So luckily for me, when I completed the course, the next day only I had the interview of many big fours, like 2 or 3 big fours. So Hmm. I was very well fresh with the course and was able to give all the practical questions easily. And theoretical questions you still have to prepare from intermediate books like essays and ES and law. Correct. So just to set the context for our audience, फलक ने थिंकिंग ब्रिज का ऑडिट मास्टर क्लास कोर्स लिया हुआ Yes, ma'am. है. एंड फलक ये कहना चाह रहे हैं कि जिस दिन लास्ट लेक्चर कंप्लीट करा उसके अगले दिन ही इंटरव्यू था. सो Yes, ma'am. द लेक्चर्स एक्चुअली हेल्प्ड in taking up the questions in the interview, right? Yes, ma'am. Right. So, Falak, as you know, as someone who has been through the journey of like clearing interviews of top 3 big fours, give us a few tips on how to prepare better for the interview in terms of the knowledge, obviously, and Yes, in ma'am. terms of other communication skills, which you think has helped you personally. I think the one of the most important thing in interviews is to just be confident. Whatever you speak, like even if I spoke wrong non-current investments, I still got a call from the company. Like if you can just be confident and explain to them like why are you thinking what you are thinking, then I think it's okay. Even if you give wrong answers, even if you are not like 100% well in technicalities, but if you are good in speaking confidently, then I think you will get a call. And interviews, I think. Interviews, you just need to be confident and be well prepared with your technicalities, and I think that will be enough. So, in terms of
टेक्निकल लाइक एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरव्यू, क्या क्या चीजें एक कैंडिडेट को प्रिपेयर करके जानी चाहिए स्पेसिफिकली फॉर आर्टिकलशिप इंटरव्यू? uh, you will you must be prepared with all the essays, AS, and law. You do not need to actually remember each and every section. Like essays, you need to remember the name and the exact essay number. हम्म. But in law, you can just, even if you can remember the steps which has been defined in law without naming the sections and subsections exactly, it will be fine. And practical questions are very necessary, like they will ask like how to audit cash and cash in hand. So then you have to say what are the assertions, like for checking an income statement item or a balance sheet item. हम्म. So I think those are the things which are not very well taught to us by our module and course, and those practical questions will definitely be needed to prepared by you either through a course of Thinking Bridge and or any other course, or through yourself, like. But you need to prepare those, because the practical aspect is the game changer. Technicalities anyone can answer, because everyone prepares for a Big Four interview. Every each essay, AS, even law section and everything they remember, but the practicality is like you have to answer it on your own. So how will you be able to do that since you have no experience? That is Correct. where the course helped the most. Like I also remember the latest Caro 2020 amendments and Schedule 3 amendments that were added in the course. So those were like the most helpful out of all the course, like, because each and every interviewer asked me about the latest amendments in Schedule 3 and Caro, and I was able to answer each and every one of them in detail, like I thanks to the course, and therefore it played an important role. चलो बहुत ही बढ़िया, आई एम सो ग्लैड कि आपको जो है हमारे कोर्स से हेल्प मिला. दैट्स द गोल एक्चुअली कि क्या है कि इंटरमी हमारे मतलब करिकुलम का प्रॉब्लम ही यही है कि वो जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, जो वो प्रैक्टिकल बेंट ऑफ माइंड हमें देना चाहिए, Yes, वो ma'am. नहीं होता. एंड दैट्स व्हाट थिंकिंग ब्रिज इज ट्राइंग टू डू टू हेल्प स्टूडेंट्स गेन दैट प्रैक्टिकल एक्सपोजर एंड हैव दैट माइंडसेट कि हाँ यार प्रैक्टिकली इस तरीके से काम होता है. सो रियली Yes. रियली हैप्पी दैट द कोर्स वाज हेल्पफुल. सो फलक, एनी लास्ट लेसन्स दैट यू वांट टू शेयर, और कोई ऐसे का क्वेश्चन आप बताना चाहें हमारी ऑडियंस को, या फिर इन जनरल एनीथिंग दैट एनी लेसन दैट यू वांट टू शेयर विद द ऑडियंस इन जनरल? Uh, I don't like one question completed assignment. I already told that. Rest everything was from the book itself. Like if you read thoroughly, and practical aspect, I've already told that you have to like make your mind practically. So course can help you with that, or any other practical exposure can help you with that. एंड लेसन तो यही है, मतलब कि मैं भी इतना कोई ज्यादा पढ़ाकू वगैरह नहीं था, बट फिर भी हार्ड वर्क था, मतलब आपको देने पड़ेंगे 10 से 12 घंटे दिन में, बट इट विल बी वर्थ ईच एंड एवरी एफर्ट. And also one thing that the unique selling USP of the CA course is if you get to a formal exposure in at the tender age of 19, 20, 21. So you must grab it with both hands and get the best opportunity you can, so that you can have a better professional career. So that's ये it. बहुत ही ज्यादा अच्छी लाइन बोली आपने फलक. सो आप सही कह रहे हो कि इन ऑल अदर कोर्सेज एक मतलब डिग्री कंप्लीट होने के बाद यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू Yes, ma'am. इंटर्नशिप्स, मतलब इंटर्नशिप्स में, लेकिन फिर वही है, वो इंटर्न लेवल का ही काम मिलता है, बहुत Yes, मतलब ma'am. इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम नहीं मिलता. बट द सीए कोर्स हैज द स्पेशलिटी दैट एट अ वेरी राइप एज यू आर गेटिंग एक्सपोजर, यू आर हैंडलिंग फाइनेंस ऑफ लाइक सच Listed बिग companies. कंपनीज. हाँ, Yes, ma'am. मतलब फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से जो है आपको उनका ऑडिट करने को मिलता है, उनके फाइनेंशियल्स हैंडल करने को मिलता है, एंड यू गेट टू टॉक टू द सीईओज एंड Yes, ma'am. सीएफओज. तो वो Yes. एक ऐसा एक्सपोजर है जो आई थिंक बहुत ही कम प्रोफेशंस में अवेलेबल है. एंड Yes, ma'am. जो आज का जो हमारा यूथ है, दैट डजंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सेलिंग एट थिंग्स इन दी अर्ली एज ऑफ द करियर. सो मैं Yes, तो ma'am. इनफैक्ट अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं या फिर जिनसे भी मिलती हूँ, मेरे साथ जो काम, मैं यही बोलती हूँ कि यार अपने अर्ली एज वाले ईयर्स में इतनी ज्यादा एक्सपोजर लो, ज्यादा ज्यादा एक्सपोजर लो, ताकि आपके जो 30s हैं या फिर लेट 20s भी जो हैं वो एकदम You can स्मूथली cruise them निकले. off. Yes. करेक्ट. सो awesome, it was great talking to you फलक, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके. And at such a young age you have the capability to think कि हाँ मुझे टॉप लेवल की कंपनी में जाना है एंड टॉप लेवल का काम करना है. A lot of very few people have that enthusiasm. So
आई रियली होप आप सब लोगों ने भी जो है फलक से थोड़ा इंस्पिरेशन ड्रॉ करा होगा। एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच फलक। एंड थैंक जब यू आपका फॉर सीए हो हैविंग मी। जाएगा, या थैंक जब यू। आपका सीए हो जाएगा तो वीड लाइक टू हैव यू वंस अगेन एंड लिसन अबाउट योर सीए फाइनल का जर्नी। डेफिनेटली श्योर। थैंक ऑलराइट, यू। थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू।